Welcome to I Love Literature. Let's talk about Composed Upon Westminster Bridge, September the 3rd, 1802, written by William Wordsworth. छोटी सी पोएम है 14 लाइन की, और 14 लाइन की पोएम है तो सोनेट है. ऑब्वियसली इट्स अ पेट्रार्कन सोनेट, लूजली written sonnet. When you look at the title of the poem, Composed Upon Westminster Bridge, September the 3rd, 1802, तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि जैसे कोई डायरी एंट्री है. और जैसा कि हम जानते हैं कि डॉरथी और वर्ड्सवर्थ एक बार इस वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पे गए थे और वर्ड्सवर्थ रोट अबाउट इट, और उस टाइम डॉरथी भी साथ थी. तो हमें डॉरथी के बारे में ये मालूम है कि शी यूज्ड टू राइट डायरीज, शी यूज्ड टू डू डायरी एंट्रीज. और उसके लिए एक बार वर्ड्सवर्थ ने कहा कि उसकी जो डायरीज हैं जो वो मेरे लिए आईज और ईयर्स हैं. और जैसा कि हम जानते हैं, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत है कि डॉरथी रोट एल्फॉक्सडर्न जर्नल व्हेन शी वाज लिविंग इन एल्फॉक्सडर्न. देन शी हैज़ रिटन she wrote Grasmere journal when she was living in Grasmere, and she used to write diary. और वो डायरी क्यों लिखती थी ये सब कुछ मैंने बताया है लाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ में, जहाँ पे मैंने लाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ की बात करी है जिस वीडियो में. इफ यू हैव नॉट सीन यू कैन सी दैट वीडियो. अब कमिंग बैक टू दिस पोम, दिस लुक्स लाइक सम डायरी एंट्री दैट वन फाइन डे दे हैपन टू गो देयर, और उन्होंने कुछ ब्यूटी देखी वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पे एंड दे रोट इट. नाउ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज इन द हार्ट ऑफ द लंदन सिटी, और वहां से वो सिटी को देखते हैं. तो लेट्स रीड आउट दिस पोम. नाउ दिस पोम इज perplexing for me क्योंकि Wordsworth is somebody, we should not forget that Wordsworth is somebody who loved nature. और अब ऐसा लगता है कि वो उन्हें सिटी, लंदन सिटी में जो कि बहुत क्राउडेड हो गई थी, जहाँ पे बहुत स्लम एरियाज आ गए थे, वो कैसे ब्यूटिफुल लग सकती है Wordsworth को. When I think about it, I'm more with late romantic writers. I'm more with Keats, Shelley, Byron. कि वर्ड्सवर्थ का कोई भरोसा नहीं है, वो बोलते क्या है और वो क्या कर देते हैं. एंड वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिसिज्म इज देयर प्रोफाउंड reverence for nature, their profound love for nature. They worship nature. और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो नेचर को कैसे वर्शिप कर पाते हैं, वो कैसे नेचर की पावर देखते हैं, वो हमें इधर देखना है. नाउ लेट्स गो थ्रू द पोम. अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. पहली लाइन ही पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वर्ड्सवर्थ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यू नो वंस यू रीड दिस पोम यू विल फील लाइक रीडिंग टिंटन एबी अगेन, कि मैं टिंटन एबी को वापस जाके पढ़ूं और मैं देखूं कि हाँ टिंटन एबी की जो खूबसूरती थी वो इस इधर से ज़्यादा नहीं थी. माइकल पोम में जो लैंडस्केप की खूबसूरती बताई है वो क्या इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? दे आर मोर ब्यूटिफुल, बट आई डोंट नो व्हाई वर्ड्सवर्थ सेज हियर दैट अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. अर्थ इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह अर्थ पे हम नहीं देख सकते हैं, और अर्थ हमें नहीं दिखा सकती है. ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है. दिस इज एक्चुअली एग्जैजरेशन, इट इज हाइपरबली. द स्टेटमेंट इटसेल्फ इज हाइपरबली. Now the next line is, dull would he be of soul who could pass by. That person will be called a dull person, insensitive person, uncaring person. And अनकेयरिंग पर्सन नहीं, उसकी सोल ही डल है जो इस जगह से निकल जाए और इसे अप्रिशिएट ना करे. दैट मीन्स दिस वेरी प्लेस इज सो बिविचिंग, सो डिलाइटफुल, सो एन्चैंटिंग दैट इट एक्चुअली captures, it encaptures your soul. The poet is not talking about body, mind, this very word soul, he's talking about soul. This place is so damn beautiful that it will capture your soul. That means it's extremely beautiful. Then poet says, a sight so touching in its majesty. In its majesty means in its grandeur, in its magnificence. क्या बढ़िया साइट है, क्या टचिंग साइट है, आपको टच कर देगी. सोल की बात कर दी है तो टच ही कर देगी.
Then poet says, this beauty now, this city now doth like a garment wear the beauty of the morning. This city now do like a garment wear the beauty of the morning. This city, which city? London city is wearing, what is it wearing? A garment. एक गारमेंट पहना है, और वो क्या गारमेंट है? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग. नाउ ये जो मॉर्निंग है, ये ऐसा लग रहा है कि सिटी ने एक ब्यूटीफुल गारमेंट पहना है. ये जो ब्यूटी है मॉर्निंग की, ये ऐसा लग रहा है कि इस लंदन सिटी का ब्यूटीफुल गारमेंट है. दिस इज पर्सोनिफिकेशन एंड लाइक अ गारमेंट इज सिमिली हियर. और इतना खूबसूरत सा कपड़ा पहना हुआ है मॉर्निंग, क्योंकि ये कपड़ा चेंज हो जाएगा. जैसे आफ्टरनून होगी, जैसे इवनिंग होगी, तो जैसे क्लोथ्स चेंज होते हैं, वैसे पोएट हमें बता रहा है. एट द सेम टाइम हमें ये पता लगता है कि दिस इज ट्रांजिएंट, बहुत कम समय के लिए ये. क्योंकि क्लोथ जो है, अगर हम कोई क्लॉथ होता है तो इट हैज़ टू चेंज द नेक्स्ट डे. सिमिलरली हियर ही सेज कि ये जो अभी का टाइम है, ये इतना बिविचिंग है, इतना आपको अट्रैक्ट करके रखता है कि इट्स लाइक अ गारमेंट, अ ब्यूटिफुल गारमेंट, ब्यूटिफुल मॉर्निंग गारमेंट दैट द सिटी इज वेयरिंग. देन पोएट सेज साइलेंट एंड बेयर. नाउ साइलेंट है, ओके, इट्स गुड बिकॉज देयर आर नो ह्यूमन एक्टिविटीज, बट व्हाई इज इट बेयर? इससे पहले वाली लाइन, इफ यू सी, द पोएट सेज that it where, and now he's saying it's bare. So this is paradoxical, as Cleant Brooke says in his work The Well-Wrought Urn, that this is a paradoxical situation. Then poet says, ships, towers, domes, theatres and temples lie open onto the fields and to the sky. So ships, towers, domes, theatres, temples, ये सब क्या है? ये इस तरीके से नहीं है कि नदी, झरना, nothing like that. All these things are man-made. So poet ऐसा नहीं है कि वो मैनमेड चीजें नहीं देख रहा है, वो सिर्फ पहाड़ों को देख रहा है या दूर फील्ड्स को देख रहा है. नहीं, पोएट बोल रहा है कि ये जो मैनमेड चीजें, ये भी ब्यूटीफुल लग रही हैं इस मॉर्निंग में. नेचर इज सुप्रीम, नेचर इज सबलाइम. If nature is beautiful, then everything that is part of the nature looks beautiful. Ships, towers, domes, theatres and temples, ये सब man-made है. Lie open onto the fields and to the sky. ऐसा लग रहा है कि एक बैकग्राउंड है, एक बैकड्रॉप है बहुत ब्यूटीफुल सा नेचर का, और उसके आगे ये चीजें बैठी हुई है. ऐसा लग रहा है कि नेचर की गोद में ये चीजें बसी हुई हैं और ये भी खूबसूरत लग रही हैं. In English, if I have to say the same thing, as if ships, towers, domes, theatres, temples are sitting in the lap of nature, in the lap of this field and to the sky. It is looking like this. And if you look at these all words, all these things, then they are suggestive of something or other. Ships ship actually symbolizes commerce, trade, lifeline. And then towers symbolize wealth, strength, power. And if you look at theater actually symbolizes values, emotions, art, literature. Temple symbolizes religion, then your meditation, then your purity of your heart, goodness, and many other things. So these all activities are lying in the nature. Actually, all these things we are capable of having ships, we are capable of building towers, theater, temples, all on the face of this earth. All these things are actually part of the nature, and the same thing is said by the poet. Then poet says, all bright and glittering in the smokeless air. All these things, everything, field, sky, ship, tower, domes, theatres, temples, all these things are bright. Why bright? Because smokeless air है, pure air है, pristine है, blissful है, serene है, and that's why it's bright and glittering. Why is it glittering? Sun rays आ रही हैं शायद,
in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep. Now he's saying this. Glittering. It's actually glittering. Kaise? Never did sun. This is again inversion, this line. Never did sun more beautifully steep. Kabhi bhi sun इस तरीके से सीधा चीरता हुआ beautifully steep नहीं करा जैसे आज कर रहा है. In his first splendor, in his first magnificence, in its first grandeur. First splendor क्या है सन का? सूरज की पहली किरण. That is the first splendor. Then the sun goes on showing its splendor, you know, throughout the day. Valley, rock or hill. So it's beautifully steeping everywhere into the valleys, rocks or hills. See, one thing I have noticed about Wordsworth सब कुछ कवर कर देते हैं. स्काई से लेके अर्थ से लेके स्काई तक कवर करेंगे. Whether you look at Tintin Abbey or you look at any other poem, whether you look at The World is Too Much With Us, Michael, वर्ड्सवर्थ किसी भी चीज को नहीं छोड़ते. पूरी की पूरी अर्थ को ले लेते हैं, स्काई को भी साथ में ले लेते हैं. देन ही सेज नेवर सॉ आई, अगेन इन वर्जन, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप. दिस इज एक्चुअली हाइपरबोली. ही सेज इतना खूबसूरत सीन मैंने कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत चीज मैंने कभी फील नहीं करी. एक्चुअली द फीलिंग इज सो नाइस ओवर देयर. The feeling is so beautiful standing there. A calm so deep. और इतना calm मैंने कभी भी feel नहीं किया. This is so true. लंदन में जो कितनी crowded city है, जो कितनी हसल बसल से भरी हुई सिटी है, वहाँ पे जो वी आवर्स में आप जो calmness feel करेंगे वो आप कभी भी नहीं करेंगे. London is like Bombay. You know, Mumbai never sleeps. So similarly, the same thing is about London. And then he says, the river glideth at his own sweet will. But the river is gliding. Which river? Thames River is gliding at his. Why not her? His. Nature को हम हर बोलते हैं, but यहाँ पे poet ने his बोला है because Thames River is actually a father figure. And the river is actually going at his own sweet will. The nature is actually working at her own sweet will. सूरज आ रहा है अपने आप, और अपने आप पानी रिवर बह रहा है, but people are not there. Dear God, the very houses seem asleep. नेचर अपना काम कर रहा है, नेचर इज डूइंग, नेचर इज एट वर्क, बट देन द हाउसेस सीम asleep. What is this? This is metaphor. People are actually sleeping and all that mighty heart is lying still. Now all that mighty heart, this London is the heart. This is actually heart of the city. London is heart of England. It is lying still. Still does not mean that heart is still means heart is dead. If heart becomes still, it goes, it will be dead. But lying still also means कि अभी भी, still it is, अभी भी सो रहा है. The mighty heart is lying still. So it can also mean that, and actually that mighty heart, because London is actually the heart of England and it is always working. जैसे हमारा हार्ट हमेशा वर्क करता है हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए, वैसे लंदन जो है वो अपने पूरी कंट्री को अलाइव रखने के लिए दिन रात काम करता है. बट राइट नाउ इट इज टेकिंग रेस्ट, एंड व्हेन एवरीथिंग इज स्टिल इन द सिटी looks so beautiful. So I don't know why Wordsworth wrote about Westminster Bridge, but then he did write about London, and he writes beautifully about it. Thank you for listening.